नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे की लेवल्स और बात करेंगे मेन सेक्टर्स के बारे में जो कि फोकस में है। शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट्स अपडेट से। ऑन वेडनेसडे द ऑल थ्री यूएस इंडाइसेस एंडेड ऑन अ फ्लैट नोट। द डाउ गेन्ड बाय 0.25%, द S&P 500 ended higher by 0.16%, and the Nasdaq ended with a marginal gain of 0.04%. The Brent oil has failed to sustain above its 200-day EMA level and thereafter witnessed a sharp correction of over 2% from the day's high. This resulted in the formation of a dark cloud cover candlestick pattern on a daily scale, which is a bearish sign. Going ahead, the 100-day EMA zone of 75 to $74.9 will act as an immediate support for the Brent oil. The US dollar index has ended on a positive note on Wednesday. Going ahead, any sustainable move above the level of 109.2 will lead to a sharp upside rally in the dollar index. अगर हम निफ्टी की व्यू की बात करें, ऑन वेडनेसडे द बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी विटनेस्ड अ करेक्शन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन. However, in the second half of the session, the index witnessed a sharp rebound of nearly 200 points. This resulted in the formation of hammer candle on a daily scale. The long lower shadow of the candle indicates buying interest at lower levels. आगे चल के 23,770 टू 23,800 का जोन इंडेक्स के लिए क्रूशियल हर्डल का काम करेगा. अगर इंडेक्स 23,800 के ऊपर सस्टेनेबल मूव होता है तो एक तेज़ पुल बैक रैली 23,940 तक पहुंच सकती है और शॉर्ट टर्म में 24,100 भी हो सकता है. नीचे की तरफ 23,580 टू 23,550 का जोन एक क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा. On the derivatives front, the January futures ended on a flat note, while the combined open interest for the current, next and far series surged by 3.11%. The 23,800 strike has a significant call open interest followed by the 24,000 strike. On the put side, the 23,600 has a substantial open interest followed by the 23,500 strike. For the weekly series, OI/PCR is at 0.72 and for the January monthly series, it is at 1.15. अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ऑल्सो विटनेस्ड रिकवरी फ्रॉम लोअर लेवल्स ऑन वेडनेसडे एंड इट हैज एंडेड अबाउट द 49,800 लेवल. गोइंग अहेड, any sustainable move above the level of 50,200 will lead to an extension of the pullback rally up to the 50,600 level. On the downside, the zone of 49,500 to 49,400 will act as an immediate support for the index. अगर हम सेंसेक्स की व्यू की बात करें, द बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स हैज आल्सो विटनेस्ड अ शार्प रिकवरी फ्रॉम द लोअर लेवल्स एंड हैज फॉर्म्ड अ हैमर कैंडल ऑन अ डेली स्केल. आगे चल के 78,400 टू 78,500 का जोन इंडेक्स के लिए क्रूशियल हर्डल का काम करेगा. अगर इंडेक्स 78,500 से ऊपर टिक गया तो पुलबैक रैली 78,900 तक बढ़ सकती है और शॉर्ट टर्म में 79,400 तक जा सकती है. नीचे की तरफ 77,800 टू 77,700 का जोन एक महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में काम करेगा. On the derivative front, the January futures ended on a flat note and the open interest of the current series has surged by 24.35%. The 78,500 strike has a significant call open interest followed by the 79,000 strike. On the put side, the 78,000 has a substantial open interest followed by the 77,500 strike. For the weekly series, OI/PCR is at 0.69. अगर हम की मार्केट इंडिकेटर्स की बात करें, द वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स एंडेड ऑन अ नेगेटिव नोट फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन. However, it is still trading above its short and long-term moving averages. Going ahead, any sustainable move above the level of 15.6 to 15.7 will lead to resume its northward journey. The advanced decline ratio was largely tilted in the favor of decliners. अगर हम की सेक्टर्स की बात करें, टेक्निकली निफ्टी मेटल, निफ्टी मीडिया, सीपीएसई एंड पीएसई स्पेस आर लाइकली टू अंडर परफॉर्म इन द शॉर्ट टर्म. ऑन द अदर हैंड, निफ्टी ऑयल एंड गैस इज आउट परफॉर्मिंग द फ्रंटलाइन इंडाइसेस. Talking about the FI/DI data, the FII sold to the tune of 3,362 crores, while the DIIs bought to the tune of 2,716 crores. The FII's long-short ratio for index futures is at 19.16, and on a net basis, they sold 17,304 index futures. So that's a wrap of today's edition of podcast. Thank you for listening. Do tune in tomorrow for more such market updates and insights.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.